त्याच्यावरून आवाज असतो बिचारी झालं इथलं 2 ठिकाणी सिलेक्शन फर्स्ट कनेक्ट कंपनी आहे मगरपट्ट्याला कनेक्टचे आपल्याला केसेस येतात फर्स्ट कनेक्टचे पण ते काय
Visible है? Online students able to hear me? Yes, yes, we can hear you. Fine. Yes, yes. पीछे रिमोट है क्या एसी का? नहीं, पीछे चेयर बेंच पे कहीं पे। Online students able to see the file now? Yes, yes, it's visible. Okay. Visible है ना पीछे से? Okay. Warm welcome to all of you. पहला लेक्चर ही है ना अब तो ये first one. Okay. Yes, yes. Okay, okay, yeah. Very good morning to all of you, and most welcome to the first session of this Shiva program. Okay, okay. So before we start, just a minute. Yeah. Can you just introduce all of you one by one? First, online students, we will begin with you. आपका नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी चल रहा है तो भी ठीक है, और अगर जॉब पे है तो उस हिसाब से ठीक है. या ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज स्टार्ट वन बाय वन. आदित्य. Yes, yes. Yeah. Good morning, all of you. This is Aditya from Pune. My name is Aditya Somnath Sawan, and I'm complete my MBA in finance. And basically, I'm from Satara, but I'm staying in Pune for my educations. So I'm currently working in Cognizant, and good to join this class. Thanks. Okay. Anita.
Hello, good morning, everyone. This is Anita. I'm basically from Pune itself, and I've completed my MCom. So I'm currently working with Loan Tap Finance Company. So it's a good opportunity that I'm joining this class. Thank you. Okay. Yeah, thank you. Archana? Hello. Yeah, Hello. hello. Yeah, go on. I'm Archana Mahana, completed my bachelor degree in BBI from Somaya College, and currently I'm working with Link Group. Okay. Chetan? Good morning to all of you. I am Chetan Dattatreya Ayub. I am from Solapur. I am pursuing my bachelor's degree in computer science from Solapur University, and I want to become a successful financial analyst. That's all about myself. Thank you. Okay. Shivanjali? Hello everyone. My name is Shivanjali Sudananda Raut. I'm from Alibag, and recently I have completed my graduation BCom from JSM College, and recently I'm side by side pursuing company secretary course. Okay. And last one is Sneha. Hi, hello everyone. My name is Sneha Madhu Reddy. I have completed my MBA in finance, and I'm currently working in one of the investment banking company, that is BNY Mellon. And my job is related to funds, but in order to get more knowledge about funds and to get a job in core finance, I'm attending this class. Thank you. Okay, thank you all of you. Now for online students, yes, you can start. My name is Sadhika Sheikh. I have completed my diploma in 2021. I am working in WMS as senior associate. Okay, yeah. I am Mudali Gilbert. I am currently pursuing MCom. I'm in the last year. Okay. Louder. My name is Radha Basanta Padale. I am doing my education in QCOM and post-graduation program. Okay, yeah. This is Abhinav Patnis. I'm currently pursuing second year in BBA. Okay. 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 So all of you are here to start a career in the financial sector specifically. All right. So see, now CBOP program is divided into 3 stages: level 1, level 2 and level 3. Okay. Level 1 में कुछ topics आएंगे, level 2 में आएंगे और level 3 में आएंगे. Okay. There will be 80% of comprising of all of these are technical topics, मतलब जो आपको actually काम करना है कंपनी में जाके वहां पे, ठीक है. Based on that, you need to at least have the skill set to perform the functions that will be provided to you, right? Second thing is 20% रहेगा आपका soft skills and like how to appear in the interviews, how to crack interviews, आपकी communication style, conversation style, English पे आपका कितना hold है या फिर आपका influence कितना हो, आप कर पाते हो interview को, ठीक है. See, basically what happens sometimes is you might be having a good amount of technical knowledge, but just because of lacking in soft skills, like your body language is not perfect, you are not having those leadership qualities, you might not be able to perform some of the managerial functions. हर बार ऐसे नहीं रहेगा इंटरव्यू की, ठीक है पूरा एक क्वेश्चन सीबॉप पे आ गया तो पूरा लास्ट क्वेश्चन तक सीबॉप पे ही चल रहा है. लास्ट में 4-5 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल मतलब एचआर बेस्ड रहता है. इफ ऑल दोस आर वर्किंग माइट बी अवेयर अबाउट इट, मतलब like okay, so like what basically like इसमें basic questions क्या क्या रहेंगे, like what interest you are having, like what type of hobbies you are having. Second thing can be कोई सिचुएशंस देंगे, कोई सिनेरियो बेस्ड, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैसी रहती है. All these skills will be measured. So it's not just कि आपका 80% all these technical things are clear तो आपका placement हो जाएगा. You also need to have an equal role. वहां पे भी आपको उतनी मेहनत करनी है जितनी यहाँ पे टेक्निकल चीज पे करनी है. करेक्ट. सेकेंड थिंग कि सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर आएंगे, उनके सेशंस भी रहेंगे आपके साथ इन बिटवीन. यस, वेलकम सर. आप हाँ अभी चल रही थी, आप ही की बात चल रही थी सॉफ्ट स्किल्स की रिलेटेड, तो वही बोल रहा था कि बिटवीन टेक्निकल एंड देयर विल बी सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम एज वेल, so you need to focus on both. Are you guys comfortable in doing this course in the morning, like this, for example, maybe 9 to 1 a.m.? Comfortable to attend the sessions in the morning or not? Yes, actually my
So when we start, maybe we'll online students, online students comfortable to attend sessions in the morning, in the weekend? Yes, yes. Yes. So maybe 10 to 2. I mean, it's time to 10:30, na? 2 बजे. हाँ बोल. हाँ yes. It's time to 10:30, na? Means in the morning. Morning 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे. Okay, okay. Not issue. Everyone on all those online, Aditya, Anita, Archana, Chetan, Yes, yes. Manjali. Yeah, please reply in the chat morning. box. Okay, okay. All those who are comfortable, please reply in the chat box. Yeah. Okay. Yes, yes, I'm pin. Okay. I think everybody is comfortable. So are you guys working also? Where? Okay, you are just huh? Don't have. Loan tag operation. Okay. Are you working? No. I'm students. Okay, you are a student. What is your course? Actually, I'm pursuing second year in BBA. Second year in BBA. Second year in BBA. Okay. Last year info. Last year Info. income. And qualification is BCom. Which year? And even online, just switch it. वीडियो ऑन कर दो सब ठीक है. हाँ हाँ yes. नहीं ठीक है उसमें आप ट्राई so see basically like my name is Kaushal and from the यहाँ से ये वीडियो ऑन करिए अपना slide cancel. Okay. So good morning. Hello everyone. Can you hear me? I'm Kaushal Yes, this side. Yes, yes. Okay. Okay. So my name is Kaushal, and basically I will be coordinating with you for all the concerns related to the training. So maybe if you have any concern, maybe you need some refresher classes, maybe you are not happy with something, anything. So your overall experience with Ematicus, if there is any concern, I will be taking care of that. So that is one of my role. The second role is that I will be also taking few classes on soft skills. Now, generally soft skill, maybe in terms of university language or maybe in terms of corporate language, but I believe that this is not about soft skills, this is about power skills. So the skills that we will be discussing will be more of power skills, not soft skills. Okay. So that is another thing. So we'll keep on meeting maybe after every 7th or 8th lecture. I will come to the class. We'll guide you what you are doing, how you can make the best use of the learning that is happening in the class, what else you should do beyond your academic life, so that you can improve on your personality, in your communication, in your overall presentation, and how you can create a brand for yourself. So how you can establish yourself as a brand. So that is something we will keep on working. I will be meeting you for approximately 8 lectures. So 8 into 4, that is 32 hours of sessions we will be having, spread in all these 3.5 months or 4 months, whatever is the course duration. Okay. So that we will discuss in the class. But then as a head of the training, it is my responsibility to make your experience a pleasant experience with Ematicus. Now, in that, we both have to work together.
You have to work and I have to work. Now, whatever I have to work, I will be working because that is my job. But as an student, you always have that freedom. Okay? You always have that freedom to say, sir, I will not be able to submit this assignment tomorrow. I need 3 more days. Sir, my job is going on. So I had a really very hectic week. My examinations were going on. So you will, so in a way, you will be having a lot of excuses, whereas the kind of position where I am or the kind of responsibility that I have, I do not have a choice of giving you any kind of excuse. मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? But then the idea is that how we can match the expectations of each other. Now, in that particular scenario, I require only 3 things from you. Only 3 things. The first is your attendance. Now, trust me, this is not a university degree. Generally, what happens, if you score less in the first year, you always have a chance to cover up in the next year. Even if you miss there, you can always cover up in third year. Those chances and opportunities are always there. But this is just a 5-month program. That too will be meeting only on weekends. And it is really very hard to keep yourself motivated every weekend. Every weekend. Otherwise, somebody will say, yeah, for the last 4 weekends, I have not met you. Come, we'll go for a party. And then you will not be able to say anything. Because that is how life has been designed, right? So you really need a strong motivation every weekend to be here. Those never take the liberty of, if you really feel about that you have enrolled for offline classes, you must be here in the class. Sometimes it's okay to take the liberty and you can join your classes from like online as well. Maybe circumstances can be there. But then 99.9%, rather 100%, your effort should be there in a way that you are joining offline classes if you have enrolled for offline. Okay. So attendance is something which is very important. The second thing is timeline for all the assignments. Okay. So you will be given assignments throughout these classes. You will be given some timeline. Within that time, you have to complete and you have to submit. Okay. There is a lot of checks and balances involved. So maybe if you have missed the deadline, it will be really very difficult for us to accommodate your request. Okay. Online students, I hope you are also able to hear whatever I'm saying. Yes, yes. Now, there may be some chances, if there are some exceptions, some medical emergency, we'll always accommodate that. There is no problem in that way. Because see, ultimately, the objective is to groom you. The objective is to help in your career and to fulfill all the dreams and desires that you have with this particular course. The third thing is that never ever ask for any preparatory leave or any kind of extension. So for example, suppose we have scheduled your examination on 7th of April, for example, and the topics has been given to you that these are the topics that we are going to cover. Now, it may happen that on 6th, you are completing some part of that particular syllabus. Now, you should not come and say that, I need some time to prepare because the topic has been just covered yesterday. So I need some time to prepare. Again, this is not an university. It means that if there is a schedule, you must appear, you must give your examinations, you must give your tests, whatever is there. See, the idea is that in these 3.5 months or 5 months, the duration that we are having, the idea is to prepare you for the corporate. Now, you may have some liberty with us because you are a student. But the moment you become an employee, you do not have that liberty. And it will be very difficult for you to cope up with those situations there in the companies. Those who are working, they know this. Okay.
So let us make a very healthy relationship. Let us work together and keep all these three things in mind. Okay. Now, one last thing. I always believe in one thing. So there is a story around this: faith versus fear. You know what is faith and what is fear. Now, are you completing your assignments, your tests, your academics, this course out of faith or out of fear? Choice is yours. I only know one thing. If you are doing it out of faith, only positive things will happen with you. But if you are completing everything out of fear, I don't know the results. I don't know the results. So maybe, like thinking that, oh, she has not been placed, so I will also not be placed. No. At the same time, if she is placed, I will also be placed. What I'm trying to tell you is that you all have your own capabilities and abilities. You have to compete with yourself. Okay? And trust me, I know only one thing, that if you have got a chance to appear for the interview, it means you equally stand a chance for that job that any other candidate stands. If you are there in the interview, it means you stand a chance, right? So please keep all these things in mind. Be positive in your approach. Give your best. If there is anything at any given point of time, if you feel that you are not able to understand, please ask the trainer. Either it is me or Siddharth sir, or for that matter, any other trainer. It is your responsibility. Okay, you can always say that, sir, this topic that you have discussed, I have not understood. Can you explain it again? Can you give me some more examples? And it is the responsibility of the trainer to satisfy your need. But then you have to ask. Because this course is designed in such a way that we hardly have any time to go back and, reflect upon the things and then to ask you, have you understood? This is not a LKG, UKG class. We believe we are equally mature. Okay, you have paid the fees, you have already spent enough time in your graduation, post-graduation, and also the things has to come from your side. You have to demand and we have to fulfill. Until unless you demand, we don't know what you need, right? So that demand has to be there, and demand of knowledge, demand of learning. Okay. Apart from that, anything that you see in the market, if you read anything, if you have any confusion, come and ask to the trainer in the class. So that, like yesterday, I have seen this one news about Paytm IPO. This is, sir, why this is happening? Sir, what is the reason for this? And then the trainer will explain you that, okay, what is the dynamics behind whatever is happening in the stock market or the investment banking market, whatever. But then you have to keep yourself updated with all the things that is happening around you. Okay. So with all due respect, with all the love and affection, with all sincerity, please make sure that you are not failing on at least these three things: your attendance, your assignments, and asking for any extra time for examination preparation. Okay. Any question you have, you can ask me. Any question? About the exams, if we are having any exams for the college. Yes. So what you need to do, that you need to see your university exams are announced well in advance. So you should inform us that these are the dates that I am having examination, and maybe around this also, if you can allow me to skip the classes or maybe skip the assignment, we'll definitely consider this. Yeah. See, ultimately the idea is to get the best out of you. But then in that process, I cannot allow you to be the lousy person, or I cannot allow you to be a careless person. आप यूनिवर्सिटी में बोलो कि एमआरटीएस में एग्जाम है, एमआरटीएस में बोलो कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, और आप कहीं जाके पार्क में बैठे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. आइदर आप एमआरटीएस में हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो, आप कहीं होने चाहिए. इन दोनों के बीच में कहीं नहीं. So the idea is that yes, you are involved in the process, you are learning the things, you are doing everything on time,
एंड अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज दैट हाँ मतलब मैं कुछ नॉलेज एक्वायर करूँ, मैं एक जॉब करूँ, मैं अपने आप को एक वेल रेप्यूटेड प्रोफेशनल के रूप में एस्टैब्लिश करूँ, राइट? इन दैट प्रोसेस वी आर देयर विद यू. Okay, so any question from online? Maybe Sneha, Anita, Aditya, Chetan, Archana. Yes, I have one. Regarding regarding notes, like we have to take down the notes, or will you be providing any booklets or something like that? Okay, so we will be giving you the access to LMS. So all the notes kind of thing or the information kind of things you will find in a form of soft copy. So we have an app. You will get all the details in respect to that. The second thing is that yes, you can always take a note in the class. It again depends upon your efficiency. And the third thing is that the trainer will also provide you some extra PPTs or some PDFs based on the concept the trainer is discussing in the class. Okay, thank you. Thank you. Okay. Anybody else? Shivanjali, Archana, Aditya, Chetan. No. Okay. Let me tell you one thing again and for the last time. You really have to be very motivated. Trust me. If I am saying this, I have a reason for this. Weekdays are okay, but on weekends, कभी आपकी फैमिली का कोई प्रोग्राम बनेगा, कभी आपके रिलेटिव्स का कोई प्रोग्राम बनेगा, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे उनका कोई प्रोग्राम बनेगा, वो वीकेंड्स पे ही बनता है, आप देख लो. But and for us the best batches are the weekends batch. तो शायद आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, है ना? और मैं आपको बोल रहा हूँ openly, if there is anything at any given point of time, if you need any support, please come to me. But then let us have a very beautiful relationship. Let us have a environment of learning. Let us have an environment of teaching. Let us have an environment of creating ourselves as a good, better, best, nice professional. Okay, chalo. So thank you so much. We'll keep on meeting as and when needed, and you can always approach me if there is anything. Okay, thank you. Thanks. Okay, thank you. Okay, students able to see the PDF file that I'm sharing? Yeah. Okay. So basically, my name is Siddharth. Okay, and I have an experience of around more than 4 to 5 years in equity research only. Okay, so ज़्यादातर तो मेरा equity stocks पे related ज़्यादा है, but I have a very well knowledge of money markets, debt markets, all these things that we will be covering up in the entire course. So basically, what we will start with is in the next session onwards. See, आपका पहले level 1 होगा, ठीक है? Level 1 के बाद आता है उसका एक revision batch. Revision मतलब I will be asking some questions directly, ठीक है? उसका आपको theoretical में way में ही आपको मुझे answers देने होंगे. Explain along with the explanations of the concept, ठीक है? Followed by examples if there are any. Okay? तो हमारा अप्रोच इसमें पीपीटी बेस्ड रहेगा, जहाँ पे कैलकुलेशंस आ रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्ट मार्केट्स मतलब लाइव मार्केट्स इन्वॉल्व हो रही है. अभी आपके केस में वीकेंड है ना, तो लाइव मार्केट्स नहीं हो पाएगी, ठीक है? बट स्टिल वी विल बी एबल टू सी द चार्ट्स, कौन से डेटा कहाँ पे क्या चल रहे हैं, दैट वी विल स्टिल बी एबल टू विजुअलाइज. बट लाइव मार्केट का एक अलग फील होता है, तो कभी बाकी के डेज में आप एक बार अपने एंड पे चेक करना, ठीक है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डीमैट अकाउंट्स? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैविंग डीमैट अकाउंट्स? Yes, Aditya. Yeah. Any other? कि बाकी सबका नहीं है? None of you are having except Aditya? I have. You have, right? Okay. Archana is having. Chetan, Shivanjali, Sneha, no one? No, sir. Yes, sir, I have Shivanjali. Okay, okay. ठीक है, तो see, डीमैट अकाउंट्स है तो अच्छी बात है,
ठीक है, ऑनलाइन कहाँ पे, ऑनलाइन अकाउंट्स है या ऑफलाइन कोई ब्रोकर है? किसमें? पायर्स में, ओके, ज़ीरोधा में, ठीक है। ज्यादातर ऑनलाइन है कि किसी का है ऑफलाइन में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन में किसी कोई ब्रोकर का? No, it's on ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स ही होंगे ज्यादातर अगर ऑनलाइन है तो। करेक्ट करेक्ट, ओके, चलो तो बेटर है। तो अंडरस्टैंड, जिनका नहीं है अगर उनको कन्वीनियंट लगता है, कंपलसरी नहीं है, बट अगर हो सकता है तो डीमैट अकाउंट ओपन करवा लो, आज नहीं तो कल तो मतलब डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट्स तो उस टाइम पे तो जरूरत पड़ेगी, तो बेटर है आज करवा लो, लेकिन मैं मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट व्हेन वी आर स्टडिंग सर्टेन टेक्निकल थिंग्स तो उस टाइम पे हमको चाहिए, करेक्ट, वन थिंग। सेकंड, अभी से आपके मोबाइल में मनी कंट्रोल का ऐप है कि नहीं है? जिनके पास नहीं है प्लीज डाउनलोड इट टुडे। मैं जितने एप्लीकेशन अभी बोल रहा हूँ ना, आज से आप लिख लो कहीं पे या तो फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में है मनी कंट्रोल और इकोनॉमिक टाइम्स, ईटी। Yes, I do have. ओके, वेरी गुड। और वेबसाइट पोर्टल्स, मतलब जिनकी वेबसाइट रहती है, आईपीओ के लिए है चित्तौड़गढ़, CHITTORGARH, चित्तौड़गढ़.com। दूसरा स्टॉक्स को देखने के लिए या एनालिसिस के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए है स्क्रीनर, screener.com, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। yes. उसके बाद आएगा ऑप्शंस और फ्यूचर्स की स्ट्रेटेजीज के लिए हमको चाहिए ऑप्स्ट्रा, OPSTRA.com, STRA, ऑप्स्ट्रा, ठीक है, ये आएंगे बाद में, लेकिन अभी से बता के रख रहा हूँ, यू कैन जस्ट गो थ्रू एनी, मतलब अगर इंटरेस्ट है तो, ओके, ये हो गया। और सी माय पैटर्न विल बी, मैं पहले आपको, सी स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके ज्यादातर थियोरेटिकल है, वहां पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के साथ भी डील नहीं कर रहे हो, पहले तो उसको समझ रहे हो कि क्या सिस्टम है, करेक्ट, तो वहां पे ज्यादातर हमारा पीपीटी अप्रोच रहेगा, और कुछ कुछ न्यूज या कुछ एक बार आपको मार्केट से आपको पता चल जाए ना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, कैसे ट्रेड होते हैं, ठीक है, फिर क्या क्या सेक्टर्स में चल रहा है, देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग द न्यूज वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, तो वो आपको देखना है, अगले दिन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वन मोर थिंग, इन बिटवीन द क्लास आई विल बी प्रोवाइडिंग यू असाइनमेंट्स, मेरे खुद के, मतलब एलएमएस के आपके अलग से हैं, वो आपको मैंडेटरी करने हैं, वो वंस यू कंप्लीट दिस, मैं पूरा भी इसका ओवरव्यू देता हूँ लेवल 1 का, उसके बाद आपका आता है वो मॉक टेस्ट। लेकिन मेरे जो असाइनमेंट्स रहेंगे वो कैसे है कि मतलब इट विल टेक हार्डली 1 आवर टू कंप्लीट, मैक्सिमम 1 आवर, छोटे छोटे असाइनमेंट्स होंगे, बट इट विल बी लाइक अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस, जितने हमारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे डायरेक्टली रेलेवेंट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वो आपको गूगल पे सर्च जाके करना है तो करो, कहीं पे भी जाके करना है कर, एनी सोर्स विल बी फाइन, बट यू नीड टू फाइंड इट आउट फॉर मी, कोई भी असाइनमेंट्स वहां पे मिस मत करना, ओके, व्हाई, बिकॉज पूरा लिंक अगर समझ में नहीं आएगा, अगर द लिंक विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द थियोरेटिकल कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट डे पूरे आधे घंटे तक वो असाइनमेंट्स के ऊपर ही डिस्कशन रहेगा, देन वी विल ट्राई टू कोरिलेट द कंसेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, करेक्ट, ओके, दैट इज वन थिंग। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हिच आर अटेंडिंग टुडे, कौन कौन से आप ऑफलाइन में आने वाले फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स? मैं level 2. Okay, Chetan will be there then. Yes. Aditya, will you be there offline? No. Means Okay, online only. अच्छा, आप कहाँ पे हो? Satara. अच्छा, सातारा में, ओके, ठीक है। अर्चना? I'm in Mumbai, so I have to join online only. Okay, Anita? I'll be joining both online also and offline also. If office timing is getting national, so Sundays I'll be attending offline only. Okay, Shivanjali? No, sir, I'm from Alibag, and last 2 months will be joined offline. ठीक है, और स्नेहा? I'll be doing online classes only because my shift timing is from 8:30 p.m. to 5 a.m. So I don't think it will be possible for me to attend offline. 8:30 p.m. to 5 a.m. Like if I'm working on Friday night, I'll be logging out at 5 a.m. on Saturday.
So immediately joining and once I will skip my sleep Okay. and also. Okay, okay, got it. ठीक है, चलो कोई इशू नहीं. Okay. ओके अब जिन लोगों को ऑफलाइन अटेंड हो सकता है तो वो देख लेना, ठीक है. बाकी रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आर हियर ओनली, राइट? ठीक है, ओके. ठीक है, तो I ये have one question. या Can if I wanted to attend offline, then how it can be? Like I have to shift to Mumbai batch, right? दैट यू नीड टू टॉक टू उत्कर्षा मैम वंस फॉर दैट. अगर वो आती है तो मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. ठीक है. And I talked to Prerna. She told me once you start with weekly batch, actually I have I can come offline after 8th of April. So I will be joining weekly batch. ओके. एक काम करता हूँ, मैं भी उत्कर्षा मैम को अपडेट दे देता हूँ और आप भी एक बार उनसे डायरेक्ट बात कर लिए. ठीक है. Yeah. Okay. Sure. ओके देन. हाँ, तो क्या है कि प्रोसेस वाइज कैसे हो सकता है और हाउ इट इज पॉसिबल या फिजिबल, दैट शी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू अ बेटर रिस्पांस इन दैट. ओके. Okay. Fine. ओके. असाइनमेंट्स की बात होगी. एप्लीकेशंस आई हैव प्रोवाइडेड यू. क्वेश्चंस जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. ओके, दैट इज डन. फिर आता है जैसे आपका कोई सॉफ्ट स्किल का होगा ना सेशन, तो जो टेक्निकल चीजें आप लोगों ने पढ़ी है उनके ऊपर ही आपको एक पीपीटी बनाने के लिए बोला जाएगा कोई भी टॉपिक के ऊपर. तो नेक्स्ट डे यू नीड टू प्रेजेंट ओवर हियर. करेक्ट, ये एक अप्रोच रहेगा वहां पे. और हाँ, यस, वंस द लेवल 1 इज कंप्लीटेड देयर विल बी प्री मॉक कंडक्टेड बाय मी. ठीक है, मतलब क्या होगा, डायरेक्टली आई विल बी आस्किंग थियोरेटिकल क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अभी दिख रहा है व्हाट इज द फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इट इज कंप्राइजिंग ऑफ. ठीक है, तो आपको मुझे वो डेफिनेशन के रूप में ही आंसर बोलना पड़ेगा. व्हाई? सी मुझे वो, मैं भी समझता हूँ कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बट व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू तो वहां पे वो इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन नहीं करना है. पहले तो आप जो आपको पता है वही बोलना है. ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो अलोंग विद द कंसेप्चुअल थियरी या तो फिर सपोर्टिंग एग्जांपल्स. करेक्ट. इंटरव्यू में अदरवाइज क्या होगा कि अदर आप डायरेक्टली बोलना स्टार्ट करें, सर एज यू नो फाइनेंशियल सिस्टम हैविंग दिस दिस दिस, ये होता है वो होता है. ऐसे नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम का जो पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है, प्लीज प्रोवाइड अ प्रॉपर डेफिनेशन. आपके लिए अच्छा रहेगा. आपका जो एक प्रेजेंटेशन का अप्रोच है वो उसको पता चलेगा कि ठीक है वो पूरे स्ट्रक्चर्ड फ्लो में बोल रहा है. करेक्ट. सो दैट इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. ओके. तो प्री मॉक में ऐसे ही पूरे के पूरे लेवल 1 के एक आपका 3-4 घंटे में लाइक एवरी स्टूडेंट विल बी आस्क्ड फॉर 15 मिनट्स. तो जितने भी टॉपिक्स मुझे रैंडमली मैं आपको पूछूंगा. उसके बाद आपका आता है मॉक. नाउ सी मॉक विल बी कंडक्टेड इफ इट इज कंडक्टेड बीइंग ऑनलाइन. तो डायरेक्टली एक एक्सटर्नल कोई फैकल्टी आएगा, डायरेक्टली आपको लेवल 1 के मतलब जो भी अपने क्वेश्चंस या थियरीज है उसमें से आपको ऐसे ही पूछेगा, या तो बोलेगा कि एक्सप्लेन करो या बनाओ पीपीटी या समथिंग लाइक दैट. बट देयर कुड बी अनदर वे ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो जहां पे आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. सो दैट इज नॉट श्योर कैसे होगा आपका, बट हाँ अप्रोच ये इन दोनों में से कोई एक होगा. करेक्ट. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कितना स्कोर करना है, कैसे स्कोर करना है, सो दैट यू आर गेटिंग एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, वो कम से कम 80 to 90%. ओके. क्योंकि क्या होता है, सी से फॉर एग्जांपल ये तो एक बैच है और अप्रोक्स कितने 20 स्टूडेंट्स होंगे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल देयर आर 5 बैचेस रनिंग ओवर हियर, नॉट जस्ट मतलब यहाँ पुणे में. तो 100 स्टूडेंट्स हुए. अब एक कंपनी आती है बोलते हैं मुझे 10 स्टूडेंट ही चाहिए प्लेसमेंट के लिए. तो आउट ऑफ 100 वो विल बी द बेस्ट 10. गेटिंग माय पॉइंट. जिनका मॉक्स में थ्रू आउट स्कोर अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट्स विल बी इंपॉर्टेंट, वही 10 सिलेक्ट होंगे ना पहले. इट्स वेरी क्लियर ऑन दैट. ठीक है. तो यू नीड टू बी वर्किंग वेरी हार्ड. ठीक है. मॉक्स में आपको कैसे भी करके 80% या 90% के ऊपर ही लाने, सो दैट देयर विल बी कैटेगराइजेशन. कैसे? टायर 1, 2 और 3 करके रहेगा. उसके कभी आएंगे उत्कर्ष में आपको समझाने. टायर 1 में कौन सी कंपनीज आती है जो ज्यादा पैकेज देती है. टायर 2 विल बी लाइक मीडियम टाइप ऑफ पैकेजेस एंड टायर 3 विल बी लाइक वेरी लो पैकेजेस. लो पैकेजेस मतलब 3-4 लाख से स्टार्टिंग. ठीक है. टायर 1 विल बी लाइक समथिंग 7 to 9 lakhs. करेक्ट. बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्किंग एफर्ट्स. सी मैं मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा, मेरा जो है वो वेरी डायरेक्ट अप्रोच है. मैं ऐसे घुमा फिरा के आपको नहीं बताऊंगा. आपको हार्ड वर्क करना है तो करना है. इंटरव्यू में आपको जो प्रिपरेशन करके जाना है उसको इसी हिसाब से आप करके जाओ. ठीक है. मेक श्योर उसके बाद आपका जो सॉफ्ट स्किल्स में एनहांसमेंट होगा, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे पोलाइट होकर बोलना है, कैसे आपको कन्वर्सेशन स्टाइल में इंग्लिश बोलना है, एवरीथिंग विल बी टॉट लेटर. बट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी योर कंसेप्ट्स.
कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया है, एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट देम इन द इंटरव्यूज, करेक्ट। तो ये अप्रोच हमारा रहेगा, ठीक है। लेवल 1, उसके बाद आपका मॉक 1 हो जाएगा, तो उसके बाद लेवल 2, मॉक 2, लेवल 3 एंड मॉक 3, ठीक है। ये पूरा आपका रोड मैप है। नाउ व्हाट कंप्राइजेस ऑफ लेवल 1, आपका ये सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सिस्टम। सो बेसिकली व्हाट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, किस किस टाइप्स की होती है, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे, वो विल बी द रेगुलेटर्स ओवर देयर। सेबी का नाम सुना है ना, सो सेबी इज अ रेगुलेटर, ठीक है। मॉनिटर करता है पूरा स्टॉक मार्केट को, उसका रोल तो वही है, फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। ऑल दिस चैप्टर्स वी विल बी स्टडीइंग वन बाय वन, सो जस्ट हैविंग राइट नाउ आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कस्टोडियंस कौन होंगे, इन्वेस्टर्स कौन होंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs किसी ने सुना हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट आर DIIs मतलब अपने म्यूचुअल फंड्स, लोकल म्यूचुअल फंड हाउसेस, LIC, ऑल दीस आर लोकल प्लेयर्स, ओके। फिर प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक्स, वो कैसे तय किया जाता है कि रिलायंस का स्टॉक 2200 का है, MRF का स्टॉक 70,000 का है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूएशन, फंडामेंटल एनालिसिस, आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए, एवरी कंपोनेंट, ठीक है। तो दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू स्टार्ट लाइक एक्सप्लोरिंग। मैं हर एक चीज आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो स्पून बेस्ड अप्रोच रहेगा, तो आपको भी उतना ही सेल्फ एक्सप्लोर करके देखना है, ठीक है। कि बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज ठीक है, लेकिन उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, एबिटा, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, वो सब क्या रहेगा, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो कौन से वैल्यूज कहाँ पे होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, दैट वी विल सी वन एग्जांपल एट द टाइम ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। हाँ, कौन से, हाँ एक एग्जांपल आएगा, हाँ हाँ ठीक है। बेसिक्स आ जाएगा, लेकिन और सी ऑल कंपोनेंट्स कांट बी कवर्ड, बट हाँ जो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज में किए जाता है दैट कैन बी कवर्ड, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन इज द अल्टीमेट थिंग, वैल्यूएशन के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ना सब कुछ चीजें, कि बिजनेस का वैल्यूएशन है कितना आ रहा है, फ्रॉम वेयर दैट इज कमिंग, ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट्स में प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट्स, ऑर्डर ड्रिवन, कोड ड्रिवन मार्केट्स, हाइब्रिड मार्केट्स, ये सब हर एक का क्लासिफिकेशन रहेगा। तो कैपिटल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। मनी मार्केट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यू माइट हैव हर्ड ऑफ बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा बहुत तो सुना है ना, ओके। फिर प्राइमरी मार्केट इज लाइक द बेसिक मार्केट, मतलब उसमें प्री IPO पहले के मार्केट, और बाद में IPO एक बार हो गया तो लॉन्चिंग ऑफ द स्टॉक्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो वहां पे कैसे ट्रेड होते हैं, प्री IPO और IPO की प्रोसेसेस क्या रहेगी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सेकंड चैप्टर इज ऑन कैश इक्विटीज। कैश इक्विटीज आर मोर ऑफ लाइक कैश स्टॉक्स, अगर जो ट्रेडिंग करता है उसको पता डायरेक्टली जो कैश के स्टॉक्स रहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक्स विल बी देयर, व्हाट टाइप ऑफ कैश इक्विटी स्टॉक्स वी विल बी डिस्कसिंग। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी स्टॉक्स, मतलब आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। बाद में आता है आपका IPO प्रोसेस, ठीक है। IPO प्रोसेस में 5 अलग अलग फेजेस होते हैं, हर एक फेज में क्या करना होता है, कौन सा रोल क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर कहाँ पे परफॉर्म करेगा। लीड मैनेजर इज मोर ऑफ लाइक अ पर्सन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो उसका बेसिकली फंक्शंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक इन एन IPO क्या रहेगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अलोंग विथ वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अदानी विल्मार का IPO आया था थोड़े टाइम पहले, इफ एनीवन नोस, पता है कि नहीं पता है अदानी विल्मार। चलो पेटीएम का आया है वो तो पता है ना, बाकी छोड़ दो चलो। हाँ, तो पेटीएम में लीड मैनेजर्स कौन थे, उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहता है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट दैट नीड्स टू बी सबमिटेड टू सेबी टू गेट एन अप्रूवल फॉर द IPO। मैं अभी तो प्राइवेट एंटिटी था, प्राइवेट लिमिटेड था, प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड में जा रहा हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके मुझे भेजना होता है सेबी को, तो उस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, सो ऑल दोस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग ओवर देयर। फिर जो इश्यू प्राइस था, पेटीएम का इश्यू प्राइस, इफ एनीवन नोस, किसी को नहीं पता, ओके 2100 के आसपास था, किसी को आइडिया है, ठीक है। अभी 500 के आसपास चल रहा है, तो 2100 का 500 कैसे हो गया और क्यों हो गया, लॉस हो रहा है ना, 1600 रुपीज फ्लैट लॉस इज देयर पर शेयर, अगर 5 शेयर भी दिए होते तो भी ऑलमोस्ट 8000 रुपीज का लॉस आ गया है, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल इज वाइट वॉश्ड ओवर देयर, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, उसका स्टोरी क्या है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट्स, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसीट्स के होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और अनदर टाइप ऑफ GDR दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो क्या होता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब कौन कहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
उनके पार्टिसिपेंट्स क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू दोस पार्टिसिपेंट्स क्यों रहेगा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सो एवरीथिंग यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, क्लासिफिकेशन के साथ। फिर आता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। नाउ देयर कुड बी प्लेयर्स जो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। सी इक्विटी मार्केट क्या होता है, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिवॉर्ड, वो तो पता है, बट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मतलब नॉर्मल अपनी एफडी तो पता है, फिक्स डिपॉजिट्स, करेक्ट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपको फिक्स इनकम मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और बैंक ने बोला ठीक है आप मुझे नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पे तो आप मुझे 500 रुपए वापस दे दो, दैट वोंट हैपन एवर, करेक्ट। तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का पर्पस क्या है, वो कब यूज में आता है, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके एडवांटेजेस along with the discussion on bonds, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स, ये सभी बॉन्ड की कैटेगरीज एवरीवन वी विल बी डिस्कसिंग along with the examples, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी, डिफर्ड बॉन्ड्स, एंड इवन द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि फिक्स इनकम है तो रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, उसके साथ भी रिस्क एसोसिएटेड है, करेक्ट। तो एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन along द सेशंस, ठीक है। मतलब पहले जैसे मान लो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम का एक सेशन हुआ तो पूरा इसके ऊपर 4 घंटे का सेशन है, ठीक है। उसके बाद आया आपका कैश इक्विटीज तो उसका 4 घंटे का सेशन, उसके बाद आया आपका फिक्स इनकम तो उसका 4 घंटे का सेशन, बट वी विल बी कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, करंट यील्ड क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कूपन बॉन्ड एंड यील्ड, ओके। सो बहुत ये यहाँ पे अभी टेक्निकल लेवल बढ़ जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके कैलकुलेशंस आपको सीखने हैं, फॉर्मूलास आएंगे, कैलकुलेटर्स ऑफ कोर्स यू कैन यूज, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आपको आना चाहिए कि कैसे ये यूज किया जाता है, ठीक है, करेक्ट। फिर आता है मनी मार्केट। So what is the money market? What are the features? Who are the main players? What is the structure of the Indian money market? How interbank lending is working? Interbank lending मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसा कुछ सुना है? आरबीआई पॉलिसी जब रिलीज होती है तब, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो कम कर दिया, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, SLR, ठीक है, all those things will be coming into the picture. Online students, anyone heard of all these terms? Yes, heard that. Yes. ओके सो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना होगा, उसका इम्पैक्ट अभी फिर स्टॉक मार्केट पे क्या आता है, उसका इम्पैक्ट मनी मार्केट पे क्या आता है, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी कमिंग इनटू मनी मार्केट, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक टर्म्स की भी जरूरत पड़ेगी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ट्रेड साइकिल, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब कुछ चीजें शायद आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, लेकिन एवरीथिंग विल बी कमिंग ओवर हियर अगेन, ठीक है। फिर आता है टेबल्स, टेबल्स में कॉम्पिटिटिव बिड्स कैसे लगती है, पूरा बिडिंग प्रोसेस कैसे चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाहर डाल दिया और उसके बाद तुरंत ही आपको बोल देगा ठीक है आपको खरीदना है तो खरीद लो, नो इट डजंट हैपन दैट वे, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रेपो, रिवर्स रेपो और उसके हेयरकट मार्जिन्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोर्स ऑफ मनी मार्केट्स। So this is everything that will be covered in the topic of money market. Then comes most important chapter, derivatives, ठीक है, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। किसी ने डेरिवेटिव में तो कैश में नहीं किया तो डेरिवेटिव्स में तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, F&O सुना है, नाम सुना है, F&O करके कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक उसके ऊपर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स पहले तो क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, फ्यूचर में क्यों ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करना चाहिए, और बाद में आता है स्वैप, स्वैप इज आल्सो डेरिवेटिव, तो स्वैप में क्यों ट्रेड करना चाहिए, एवरीवन हैव दैट डिफरेंट रीजंस, ठीक है। अब ये एक्चुअली लाइव मार्केट में ज्यादा समझने को हो सकता है, बट ऑफ कोर्स वी हैव दैट अकाउंट्स, तो डायरेक्टली हम चार्ट के ऊपर देख से we will be able to create the positions, but only difference is we will not be able to determine the live prices, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड रोल ऑफ द स्पेक्युलेटर्स, रोल ऑफ हेजर्स। नाउ सी ऑल दिस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर बेसिकली ट्रेडेड फॉर टू पर्पस। कोई तो स्पेक्युलेटर रहेगा, स्पेक्युलेटर मतलब उसको विजुअलाइज होगा कि ये स्टॉक अच्छा चल सकता है तो उसका मैं लॉन्ग टर्म का वाला कोई फ्यूचर ले लेता हूँ, दूर का ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। हेजर मतलब हेजिंग इज पोर्टफोलियो या तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस विद द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब एक पूरा एक पोजीशन था उसको उसका रिस्क कम करने के लिए मैंने दूसरा पोजीशन क्रिएट किया हुआ मार्केट में, तो वो कैसे वर्कआउट होता है, कैसे पोजीशंस क्रिएट की जाती है, एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड ओवर हियर, हेजर्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। बाद में आता है व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, उसके एसोसिएटेड विद द डेरिवेटिव्स एंड एडवांटेजेस, ठीक है, सेम टू सेम। लॉन्ग टर्म पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया, लॉन्ग मतलब बुलिश,
इफ एनीवन इज अवेयर अबाउट लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग मतलब क्या, मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील विल बी इंक्रीजिंग इन द नियर फ्यूचर, तो उसका पोजीशन बोलते हैं लॉन्ग किया हुआ है। शॉर्ट मतलब ऊपर से सेल किया हुआ है, तो ऊपर से हायर लेवल्स पे मैंने सेल किया, नीचे जाके बाय किया, तो रिवर्स ट्रांजेक्शंस। लॉन्ग मतलब बाय एंड सेल, एंड शॉर्ट मतलब सेल एंड बाय, ठीक है। अब वो पोजीशंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग विल बी मेंशन, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन मतलब कितना पैसा लगेगा, तो दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो, ठीक है। सिमिलर वे वी विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस। ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन है ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ोगे, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट ओवर देयर, ठीक है। ऑप्शंस कैसे काम करता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस कैसे काम करती है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन स्पॉट प्राइस। ये अभी थोड़ा ऊपर से जाएगा, बट वंस द चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग यू विल कम टू नो, ठीक है। फिर आता है पे ऑफ। पे ऑफ मतलब अगर मैंने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। सी ऑप्शंस ऐसी चीज है कि 100 रुपए के को भी वो 1 लाख रुपए कर देगा एक ही दिन में, ठीक है, लेकिन वो पता होना चाहिए कि कैसे हो सकता है, करेक्ट। ऑप्शन का प्रीमियम, ऑप्शन के प्राइसेस आर नोन एज प्रीमियम्स, ठीक है। तो वो स्ट्राइक प्राइस का कितना प्रीमियम रहेगा, इन द मनी है, एट द मनी, आउट ऑफ मनी के मार्केट से, ठीक है, वो सब भी उसमें आएगा। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, सारे कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस। तो लॉन्ग, एक फ्यूचर को लॉन्ग किया, एक ऑप्शन को शॉर्ट किया, दोनों को शॉर्ट कर दिए। कॉल एंड पुट्स, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। दोनों को खरीद लिया, कॉल को लॉन्ग किया, एक दूर वाले कॉल को शॉर्ट किया, पुट लॉन्ग किया, पुट को शॉर्ट किया। बहुत सारी पोजीशंस कैन बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन अवर रिस्क एपेटाइट, लेकिन अपने को पता चलेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। फिर आता है फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, बेसिकली डीलिंग इनटू डिफरेंट करेंसीज। इंडियन रुपी के बदले में मुझे आज यूएस डॉलर्स खरीदने हैं, मुझे पता चला कि इंडियन रुपी विल अप्रिशिएट एंड यूएस डॉलर्स विल अप्रिशिएट बाय क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया या फिर वॉर वगैरह हो गया, तो वहां पे उस टाइम पे डॉलर्स विल राइज। 76 के आसपास चल रहा है अभी करेंसी रेट, तो दैट ऑल थिंग्स विल यू विल कम टू नो थ्रू मनी कंट्रोल। वहां पे लाइव प्राइसेस आपको रहता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइसेस भी रहेंगे आज, अगर घर पे जाके यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। 1 इंडियन रुपी सॉरी 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंडियन रुपीज। फिर वहां पे कौन कौन सी अलग के करेंसीज आएंगी, पाउंड आएंगे, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर्स। तो एवरी ट्रांजेक्शन कैसे करेंसी पेयर में होता है, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। उसमें फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, वो आर द मार्केट मेकर्स एंड वो विल बी एट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी यू विल बी कम टू नो। फिर आता है स्वैप्स, बेसिक ऑफ स्वैप, स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। टाइप ऑफ स्वैप्स, 3 टाइप के बेसिक, 4 टाइप के बेसिकली वी विल डिस्कस। इंटरेस्ट रेट स्वैप, फिर आता है इक्विटी स्वैप, तीसरा आता है एफएक्स स्वैप, और लास्ट आता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। अब चारों 4 कैटेगरीज के डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एग्जांपल्स, करेक्ट। तो पूरा एक टेबल ही बन जाएगा उसका। सो व्हेनेवर यू व्हेन आई एम आस्किंग व्हाट इज इक्विटी स्वैप, तो आपको मुझे वहीं से ढूंढ के बोलना है। ऑल द थियरीज यू विल बी राइटिंग इन द क्लास, कुछ कुछ बोलूंगा जहां पे आपको लिखना है, तो यू विल नोट इट डाउन। कुछ कुछ होगा डायरेक्टली यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट फ्रॉम अदर सोर्सेज, पीडीएफ, पीपीटी, आपको कहीं से भी और एक्सप्लेनेशन मिलती है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि यू नीड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन द फाइनल स्टेज ऑफ द इंटरव्यू, करेक्ट। तो पर्पस यही होगा पूरा। और उसके बाद आता है पूरा ये हो गया, हाँ, दैट इज द एंड ऑफ लेवल 1, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका पूरा रहेगा लेवल 1। डिस्कशंस वी विल बी टेकिंग प्लेस थ्रू पीपीटीज, असाइनमेंट्स उसी टाइम दे दूंगा जहां जहां पे मुझे लगता है डायरेक्टली थियरीज के रिलेवेंट आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड किए करने चाहिए। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि आपको स्टॉक मार्केट का भी कोई इतना नॉलेज ही नहीं है शायद मेरे ख्याल से, तो बिकॉज ऑफ विच यू नीड टू नाउ स्टार्ट गैदरिंग न्यूज अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है। मनी कंट्रोल पे जाओ, ईटी वाली एप्लीकेशन देखो, कौन कौन से न्यूज आ रहे हैं, एटलीस्ट एक आर्टिकल हर रोज का पढ़ो, वी विल डिस्कस इन द क्लास। कुछ ऐसा आर्टिकल लगा कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज लेट मी नो इन द क्लास, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे ट्रांजेक्शन में हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल कम टू नो ड्यूरिंग द डिस्कशंस, बट अगर आप देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं और बोलोगे नहीं, देन यू विल नॉट कम टू नो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस नाउ? टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा हैवी हो जाएगा एक साथ डाइजेस्ट करने में, बट यस, वन बाय वन वी विल बी टेकिंग इट, इट विल ऑलमोस्ट टेक 1 मंथ। हाँ, नोट्स में मतलब शायद एक पीडीएफ रहेगा, ठीक है, पीपीटी आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, ठीक है। और बाद में कोई एक्स्ट्रा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पीडीएफ एंड पीपीटी वही बस हमारा ये है आपका। प्लीज एक्सप्लोर अदर सोर्सेज ऑल्सो इक्वली, आपके पास पूरा हफ्ता रहेगा बीच में, मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करो कंसेप्ट के बारे में, न्यूज के बारे में,
फॉर एग्जांपल अभी बोनस इशू हुआ था, बोनस नहीं, दिस राइट बैक आया है, किसका आया है? एनीवन नोस? टीसीएस का? कोई आइडिया नहीं है। तो राइट बैक पहले तो क्या होता है वही समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है? बाय बैक, सॉरी नॉट राइट बैक, बाय बैक, ठीक है? हाँ हाँ यस, सो बाइंग बैक ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो कंपनी ऐसा क्यों करेगी? ओपन मार्केट से वो खुद, और क्या बोला है उन्होंने, अभी करंटली प्राइस चल रहा है 3700, बाय बैक कर रहे हैं 4500 पे, मतलब 800 रुपीज का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ जिनके पास टीसीएस के शेयर्स है, ठीक है? तो वो बायबैक क्यों कर रही है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कौन से प्राइसेस पे बायबैक कर रहे हैं, दैट इज अ वैल्यूएशन थिंग, ठीक है? लेकिन इतना क्यों हो रहा है उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिमिलरली बोनस इश्यूज, राइट्स इश्यू, वी विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल एग्जांपल्स, एक नहीं बहुत सारे आएंगे, पूरे के पूरे सेक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है? ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, आईटी, फार्मा, सीमेंट, इंफ्रा, एवरीथिंग विल बी कमिंग। और आपको कम से कम 5 नाम स्टॉक्स के हर एक सेक्टर के पता होने चाहिए, लीडिंग वंस, ठीक है? लार्ज कैप, मिड कैप वाले, कोई मतलब स्मॉल कैप या उसके नीचे वाला भी अगर है तो अगर वो पता नहीं है तो चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि सेक्टर में क्या चल रहा है, सेक्टर के रिलेटेड फिर कंपनी में क्या चल रहा है, अच्छा कर रही है परफॉर्म, बुरा कर रही है, ठीक है? वैल्यूएशन के हिसाब से सही है नहीं है। कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा आपको तो इंटरेक्टिव ज्यादा रहेगा, ठीक है? बीच बीच में कुछ वीडियोस भी आएंगे जहाँ पे कुछ ड्राइंग्स आएंगे या फिर डायरेक्टली फनी वीडियोस रहेंगे कुछ, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कोरिलेट द कंटेंट, ठीक है? Any doubts, online students till now? No. Of course, daily से अभी तो मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। If I am asking what is the level of Nifty today, Sensex today, Bank Nifty, ये 3 तो पता है, बाय हार्ट होने चाहिए। निफ्टी कितने पे चल रहा है, बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, और सेंसेक्स कितना चल रहा है, हर रोज देखना स्टार्ट करना पड़ेगा अभी तो ये, तभी तो आप यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द मार्केट्स, ठीक है? अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा, एग्जांपल्स देते रहूंगा, फिर वो नेक्स्ट वीक में क्या सर कौन सा एग्जांपल था वो याद ही नहीं रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो एवरीडे स्टार्ट वाचिंग मार्केट्स, भले 10 मिनट देखो, मनी कंट्रोल ओपन करो, मार्केट्स का प्राइस देख लो, कुछ स्टॉक्स आपको एक्सप्लोर करने क्या भाव चल रहा है, ऐसे करके देख लो, ठीक है? क्लियर? Checking the stock prices, yes, yes. It is for news related to sectors या policies, बहुत सारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी तो आएगी जो इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को, तो वो पॉलिसीज के रिलेटेड न्यूज, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है? अगर डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से तो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अगर मैं अभी पूछ रहा हूँ आपको कि पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो आपको शायद अभी कोई भी पता नहीं होगा, शायद IRCTC सबने सुना हुआ है, यू आर बुकिंग योर ट्रेन टिकट्स IRCTC से, तो दैट इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है? बहुत सारे हैं। तो मैं ONGC है, और कोल इंडिया है, और अपनी जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL, BPCL, IOC, ऑल दोस आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, गवर्नमेंट का ही पूरा हिस्सा है ज्यादातर, बाकी थोड़ा बहुत प्राइवेट में चला गया है। तो लेकिन आपको नाम पता नहीं है, उसका प्राइस पता नहीं है, तो डिस्कशन कैसे कर पाएंगे फिर, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू नीड टू कोरिलेट इट, ओके? चित्तौड़गढ़ इज फॉर IPO, स्पेसिफिक IPO ओनली, और स्क्रीनर है फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब वहां पे हर एक कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पिछले 5 साल का स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था, 1 साल में कितना चल रहा था, डेटा आपको निकाल के लाना पड़ेगा, ठीक है? हर एक चीज का मैं पूछूंगा कि इसका पिछले 3 साल के पहले क्या डेटा था, क्या प्राइस पे चल रहा था, पिछले 1 साल में कितना चल रहा था। सिर्फ फॉर एग्जांपल 2 साल पहले तानला प्लेटफॉर्म्स करके एक कंपनी है, 5G के रिलेटेड है, ठीक है? उसका स्टॉक प्राइस था 40 रुपीज ओनली, ठीक है? अभी 3 महीने पहले 2100 को टच करके आया है, ओके? 40 रुपए का 2000 क्रॉस कर दिया। तो ऑलमोस्ट अगर आपने वहां पे 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 40, हाउ मेनी शेयर्स, काउंट करो, मैं डायरेक्टली बोलूंगा ऐसे। Same as Adani Port also, no sir? Yeah, many are there, we will discuss so Yes, many yes. examples. 10,000 divided by 40 is how many? कैलसी है, मोबाइल में कर लो। What sir? 250. 10,000 divided by 40, how many shares? 250। तो अभी उनका प्राइस 2000 है, तो 250 into 2000 कितना होगा? 250 into 2000 5 lakh. 5 लाख रुपीस, 10,000 का कितना बन गया? 5 लाख रुपए बन गया 2 साल में, करेक्ट? तो अगर आपको ऐसी कंपनीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे रिसर्च करोगे? एट द एंड ऑफ डे एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट रोल्स क्या रहेगा? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है? IB का रोल्स मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर के ऐसा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, बुकिंग फॉर द IPO। अब BNY मेलन में कौन है?
कोई तो था ना यहाँ से who is working in the IB bank. Yes, I am. मैं Sneha Sneha, yeah, right. So हाँ, आपका बेसिक रोल क्या है अभी? मैं जस्ट फंड्स अलॉट करती हूँ. ओके, फंड जैसे हमें एलोकेशन. रिक्वेस्ट, या फंड एलोकेशन. अच्छा, कहाँ पे कौन से, मतलब कोई प्रोडक्ट्स कौन सी रहेगा? प्रोडक्ट्स मतलब ये सारे यूएस बेस्ड फंड्स होते हैं एंड नथिंग रिलेटेड टू इंडियन फंड्स. उनके तो आप अलग अलग एलोकेट ही कहाँ पे, फंड्स होते हैं. अच्छा एलोकेशन कहाँ पे करते हो? वहीं यूएस मार्केट्स में? हाँ, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है पैथ्स Okay. करके शॉर्ट फॉर्म. तो ठीक है. उसमें हमें जस्ट एलोकेट करने के लिए होता है. मतलब कोर रिलेटेड में नहीं हूँ मैं, नॉन कोर करेक्ट रिलेटेड. करेक्ट, अच्छा हाँ समझ गया. ओके हाँ, तो फिर भी ठीक है चलो, लेकिन अगर आपको यूएस मार्केट्स के बारे में बोला जाए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोलूँ, तो वो मार्केट के नाम भी नहीं पता है आपको फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे एलोकेट करोगे? स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग 1 लाख ऑफ रुपीज और मैं बोल रहा हूँ कि एक साल में मुझे कैसे भी करके 20% रिटर्न दो, एफडी तो मुझे 5% ही दे रही है, इसलिए मुझे इक्विटी मार्केट में डालना है, तो कहाँ पे डालोगे? स्टॉक के बारे में ही पता नहीं है, तो आप 1 लाख कहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये सब चीजें के लिए आपको अभी से ही वो मार्केट्स को ट्रैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा. स्लोली स्टार्ट इन रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स. ठीक है, कुछ कुछ तो मतलब आपको मनी कंट्रोल में डायरेक्टली दिख जाएंगे, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, पर्टिकुलर डे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग क्या रहेगा, पोजिशनल क्या होगा, डिलीवरी कैसे होता है, ठीक है, सेटलमेंट कैसे होता है, क्लियरिंग में कैसे जाता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द प्रोसेसेस. करेक्ट? So far any doubts now? Opstra, no, Opstra is not for money market, it is for future and options. हाँ, एनालिसिस के लिए. मनी मार्केट के लिए तो डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट. यस, डाउट? गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एनएससी, बीएससी, वहां पे भी कोड्स मिल जाएंगे, टी बिल्स वगैरह के. ठीक है, कभी कभी ओटीसी मार्केट, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, आई एम नॉट डूइंग थ्रू एनी एक्सचेंज, मैं डायरेक्टली दूसरी एंटिटी जो सेल कर रही है वहीं से खरीद रहा हूँ. ओटीसी मार्केटर क्या होता है, मैं कॉल किया एक दूसरे बंदे को कि आपके पास इतना है माल, तो ठीक है मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ, आप मुझे माल दे दो. दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ओटीसी मार्केट. ठीक है, अब ओटीसी में डेरिवेटिव्स भी आते हैं, ओटीसी में फ्यूचर भी आते हैं, ओटीसी में ऑप्शंस भी आएंगे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, एवरीथिंग विल कम. ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सचेंजिंग द ट्रांजेक्शंस, और कुछ नहीं है. ठीक है, ओके डन. Okay, now let me call Utkarshan. She will be taking the follow-up session. कि मैं एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार चेक कर लो, अगर नहीं हुआ तो विल चेक इट. वो नीचे से एक बार चेंज कर दो स्पीकर. लेट मी जस्ट चेक. स्पीकर्स ये शायद
Students able to hear now? Yes. कौन सा चलता है इसमें? This one? Online students able to hear now? Yes. Okay. Utkarsha ma'am will be taking forward now. Okay. Online students, can you hear me? Yes, we can. Yes. Loud and clear, right? If there's any disturbance, let me know. Okay. Okay, so my name is Utkarsha and I'm handling the training governance part. That means like whatever queries you have in regards to your training, your scheduling, technical issues, anything sort of that, I'll be the very first point of contact for all of you guys. Okay, so you can reach out to me on any of the platforms, WhatsApp, call, or email. Firstly, I would prefer email communication because it will be better for you as well for future references. In case if you have any concerns, first drop in an email, give me 24 to 48 hours and I'll get back to you with a resolution. Okay, so quickly explaining the hierarchy. First, because I'll be the very first point of contact for all of you guys, my week off would be on Mondays. Apart from that day, I'll be available from 10 to 7, Tuesday to Sunday. So you can reach out to me for any of the concerns or whatever you want to raise. Okay, while you drop in an email for your issues or concerns or feedbacks, you have to put the subject line as it is over there. Okay, if you have any concerns related to training, keep your subject line as simple as that, that you have training issues. And if it is something urgency, which you need to get it resolved on priority basis, keep the subject line as it is. Okay, so that I can look into your issue and get back to you. Understood the hierarchy? Like first reach out to me. In case my answers are not satisfactory or I'm not able to resolve your issues in the set timeline, you can reach out to our training manager. So for us, Kaushal Singh is the training manager. He's also a soft skills trainer. So whatever the sessions related to your communication would be happening, he'll be taking that, as well as he'll be like looking forward to all the training issues as well. So you'll also be looking forward to the training issues from a higher authority perspective.
Okay, if in case we both are not able to resolve your issues, or in case our answers are not satisfactory, you can reach out to our vice president for the Pune Center. Dharmesh Doshi is the vice president. Some of you might have heard his name or must have interacted with him. So he'll also be interacting with all of you guys during the course duration. Okay, so follow this hierarchy, follow the process. Make sure that you first drop in an email, and if it is a reminder, you put up on the call or WhatsApp group or WhatsApp. So you already have my number. I'm there in the WhatsApp group, and all the other stakeholders are also there in the WhatsApp group. Kaushal sir is there, Aarti is there, Dharmesh sir is there. So whatever concerns you have, you can raise in the WhatsApp group as well. Clear about this? Any issues or any concerns related to this? Okay. If I'm too fast, just stop me in between so I can repeat it again. Okay. So you do not miss anything. Okay. So you must have received a welcome email from my end. There are 2 PDFs attached into that email. Okay. One is your learner handbook and one is your course curriculum. From the day one itself, once your classes starts, please make sure take a printout of this, or if in case you can, jot down the things in the PDF itself in the learner handbook. In the course curriculum. Make a habit of jotting each and everything down. So if in case your first session is of cash equities, make sure that you highlighted that yes, these particular topics are being done. Now, this gives you an idea while at the end of the course, while you are preparing for your final exams or mock, you know that what exactly things are covered up. In case anything is missed out or anything sort of like that, or you session on particular topic, you have the particular documentation ready with you. Okay, so you can just let the trainer know accordingly, and you can revise. So revision purpose ke liye wo easy ho jayega. Okay, online students, am I clear till here? Any questions so far? Yes, we're clear. Yeah? Okay, great. So I'll quickly move forward. This is the learning portal things written over here. Visible properly? Okay. So we'll be sharing across the LMS access. LMS is your learning portal. You'll be having the access to this learning portal for 12 months. So from the date of creation till 12 months, you'll be having the access of this. Now this LMS portal consists of all your soft copies. So this is the material prepared for the candidates wherein they can study each and everything related to course. So you'll also be having your assignments into this particular portal. You'll be having your exam. Guys, don't make noise, please. Go above. You'll also be having the assignments over here. Okay. Then you'll be having a couple of quizzes on each and every topic. And I'll be letting you all know when you need to exactly complete all these. So every assistance in regards to the timetable or in regards to completion will be provided to you, either by me or either by the trainer. Okay. As you can see, interactive videos is also a part. So these interactive videos are being created by the expert faculties. So the industry expert in like collaboration with our product manager have created these couple of videos on each and every topic. What we would be requesting you is that before you come to the class, next class, so आप लोगों को पता है कि अभी next class आपकी कौन सी होने वाली है, कौन से topic की होने वाली है. So just make sure that for once at least go through that video. So you understand. For example, if you're not from the core finance background, you would not be familiar with that particular topic or a word. So in case if you just go through these videos, you at least know and you can connect directly with the teaching. So जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, that will be from the scratch itself. But at least when you hear about that particular word, you would connect very quickly with the same. So hence we ask each and every student to go through these videos at least for once. The PDFs, PPT, whatever is being there, but just go for that at least for once. Okay. We are not asking you to ratify it because that's not what we are going to expect from you guys. Everything, as I said, it will be taught into the class each and every year. But from your perspective, we are going to ask you to complete each and everything. Okay? So I'm talking about the PPTs, PDF, and interactive video. Quizzes section. Two parts. One is assignment and one is quizzes. Now, assignment, the word wherein will be that will be carrying the marks for your certification purpose. Okay, so there is somewhere around 8. Hello. Assignments. At most
important part. Hello, Utkarsh. Hello. Sorry to interrupt you because your voice is breaking. Hello. I think she is disconnected. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, she is connecting in few minutes. Okay. Guys, am I audible? Yeah. Yes. I'm so sorry, I lost the connectivity. So online students still there? Have you heard? Till quizzes, like you'll be there will be weekly quizzes or something. You will tell us when to. Great. So you have not missed much. So I was talking about the quizzes and assignments part. So quizzes is something that you have to pre-solve before you go ahead with the assignment section. So quizzes marks will not be carried to in your grade book or in your certification, but assignments would. So quizzes are a little bit harder than the assignments. The idea behind it is we cannot re-trigger or give you a chance to complete the assignments again. So the passing criteria for assignment is 60%. So if you do not score 60%, you will be considered as failed into that particular assignment. So वो complete करने से पहले आपको quiz एक बार complete करनी है, practice that, and then only move forward with the assignments. When you're sure that you are clear with the concept, then only go ahead with the particular assignment. Clear till you? Clear about the assignment and quizzes? Any questions so far? I'll be repeating this again and again because today itself you will not remember anything. So I'll be obviously letting you all know कि कैसे क्या complete करना है, what is required to be completed. Okay, but clear right now, you're clear with it, right? Okay. Online students, am I clear? Yes. Okay. Yes. So third part is your grade book. Grade book is a mechanism where you can track your performance. So you will also be able to track the performance. I'll also be able to track your performance. Okay. So जो भी आप assignments complete करोगे, the scores will directly reflect over there. So you'll be able to understand this is the grading or this is the scoring which you have achieved till now. So from there itself, you can check it. Now we have the application available on the mobile phone also. Android and iOS दोनों के लिए available है. You can scan the QR code which is available over here and directly download the application. आप लोगों को सारा जो मटेरियल है यहीं पे दिखेगा, बट ग्रेड बुक सिर्फ आप मोबाइल ऐप से चेक नहीं कर पाओगे बिकॉज द मैकेनिज्म इज नॉट बीन इनबिल्ट ओवर देयर in the mobile app. So you have to go directly to the URL. Either from the phone you can go to the URL desktop site या फिर laptop computer से आप एक बार check कर सकते हो. So you'll be able to understand. Okay, clear till here? Okay. Then assignments I have already talked about. Project, you don't have any sort of project, that is for another course, but it's written over there. So assignment is what you have to focus on. So apart from assignment, your curriculum will also be divided into 2 examinations, that is midterm and final exam. The criteria remains the same. 60% आपको score करना है. 100 marks का paper रहेगा. Pattern is MCQ.
there's no negative marking over there, and आपके जो assignments है उसका भी सेम ही पैटर्न रहेगा. सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज एंड टीएलसी, ये जो 2 टॉपिक है उस पे सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द असाइनमेंट्स, ऑल द करिकुलम और ऑल द टॉपिक्स वुड बी प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड. तो आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है उसमें एंड देन सबमिटेड एंड इमीडिएटली यू विल गेट द स्कोर ओवर देयर अपडेटेड. ठीक है. अब मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम में अगर आप फेल होते हो तो यू गेट 1 चांस टू रीअपियर. आई विल बी लेटिंग यू ऑल नो कभी आप लोगों को कंप्लीट करना है. Assignments का जो क्वेश्चन पेपर है that is already available, so you can see now also, like when you get the access you will be able to see the question paper over there itself. But midterm and final exam का question paper you won't be able to see. So जिस दिन मैं आपको schedule बताऊंगी, time table बताऊंगी, उस दिन पे आप लोगों का वो exam trigger हो जाएगा. Then you have to complete it. So it's not a compulsion कि classroom student needs to come over here and complete it, or the online student needs to be on the call and complete it. Monitoring सिर्फ आपके score कैसे आप लोगों के आए हैं उस basis पे होगा purely. Okay, because we are more focusing on the theoretical part, because knowledge concept wise आप लोगों को clarity होनी चाहिए. So more focus and monitoring would be on the orals or mocks. So mocks is also one part of your curriculum. So as you know, your curriculum, your syllabus is divided into 3 parts: level 1, level 2 and level 3. तो तीनों लेवल के आपके मॉक्स रहेंगे, कंडक्ट किए जाएंगे. So that will be online सबके लिए, even for the classroom online students के लिए ऑनलाइन रहेगा. It's not an open book, but please ensure that, yeah. Yes, you can complete that. See, again, I'm saying that we are not more focusing towards the examinations, because the question so far is we need to make you clear with the concepts. आप लोगों को कुछ solve नहीं करना है. So we will not be monitoring that much, that rigorously on the assignments or exam section. अगर आपको नहीं आता है कुछ concept, obviously you can take help from Google or your notes. That's totally fine with us. But mocks में obviously वो बहुत ज़्यादा strictly monitor किया जाएगा. And that will be the much important aspect from the perspective of your placements and your certification. Okay. Aditya, yeah, yes, you have some question? Yes. Midterm and final exam is the same criteria for the passing? Passing criteria? Yeah. Means midterm and final exam are the same criteria of passing? Yes. Assignments, okay. Mocks, exams, everything, each and everything has the same passing criteria. 60% आपको score करने हैं above उसके, ठीक है? Below that, we have divided that into percentage or tiering section. So I'll cover it up in the later part. But as of now, you're clear with it, right? Yes. Clear with it, right? Okay. No descriptive. You don't have to define any of the question or any of the concept in the examination. But mocks में obviously आप लोगों को orals में जब भी आपको question पूछा जाएगा, you have to describe the concept. Give examples, give realistic examples, industry examples. Yes, orally. उसमें आपको कुछ solve करने के लिए नहीं बोला जाएगा. You just have to be properly, formally dressed up. Video आपका on रखना है in front of the interviewer. And वो जैसे आपका live interview होता है industry में, उस तरीके से conduct किया जाएगा. So I'll tell you the portion also, like how it will be evaluated and how exactly it will be, the scoring criteria would be there. That also I'll cover it up in the later part. यहाँ तक सब clear है? Any doubts? No doubts? Okay. Moving forward with the feedback section. Now feedback for each level will be asked. So level 1 जब आपका complete हो जाएगा, feedback will be taken in the LMS itself. Now आप लोग मुझे आके बोलोगे, mail पे लिखोगे, that will also be considered. Each and everything. So feedback on all the levels, the entire curriculum, each and everything would be tracked. But this is one of the mechanism where the product team would also be tracking your feedback, because concept-wise उनको ज़्यादा clarity नहीं. I'll be understanding from the overall perspective. But अगर in depth अगर कुछ topic में आपको issues है, नहीं समझ में आया है, you want revision sessions, anything sort of that, you can put it across on this feedback form. So whenever I ask you for the feedback, please ensure कि आप वो complete करो. It's a 5 minutes activity. It's a quick form wherein they'll be asking you about how much you have completed, how much you have understood, what is the trainer delivery. All these kind of sort of questions would be there where you need to give the rating. तो अकॉर्डिंगली जो भी आप लोगों को समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, उस हिसाब से वो फीडबैक फॉर्म में आप इनपुट करते जाओ.
Clear till here? Clear about what exactly the LMS would be containing about? So once I give you the LMS access, you can have a look on the same. You can surf through it and you would know what exactly it looks like. Okay? Clear till here? Online students, clear till here? Any questions so far? No, clear. Okay, great. So within like 48 hours or 72 hours, one form bhejenge Aarti ma'am, so that you have to fill up. Once I receive all your details, then I'll be creating this LMS access. So maximum, I guess today is Saturday. So by Tuesday, you'll be receiving the details. Okay, for the LMS. Coming to the next part is your feedback and issue resolution. As I said in the start itself, this is a matrix which you need to follow. So hierarchy follow karna ek bari. Yahan pe below itself, the centralized email ID is also mentioned. So for example, you're not able to reach out to us or we are not able to solve your query on time, you can even drop the email on vcare@imarticast.com, which is handled by the head office. So वो लोग आपको resolution देंगे या they'll forward it to us to look after it. ठीक है? So this is the basic hierarchy which you need to follow. Then comes the placement portal. Moving towards the placement portal is that there is certain eligibility criteria which you need to follow. Okay, so आप लोगों का जो placement है वो start होगा once your final mocks has been completed and जब आप लोगों को certificate मिलेगा. So there's a placement portal called as Superset, जिसका access आप लोगों को within 48 hours मिलेगा once your certification has been done. Now placement portal में will be it's a job portal where you'll be getting all the opportunities related to your tiering or related to your percentage which you are secured. Okay, तो यहाँ पे आपको timely updates मिलेंगे. You can download the portal on your phone or you can just view it. But वहाँ से आप लोगों को apply करना है, resume upload करना है, and वहीं से आप लोगों के applications declined, rejected, accepted, whatsoever the updates are, you'll be getting it from the portal itself. It's just like your LinkedIn or Naukri platform, kind of. Okay. So since you all are aware that your domain sessions would be going on, apart from your domain sessions, there also would be your communication session. So somewhere around 6-7 sessions would be there overall, which will include your presentation skills, then YouTube submission. तो एक topic दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको खुद को video बनाना है, वो YouTube पे upload करना है, उसका evaluation रहेगा and LMS पे उसके scores update होंगे. So it will be somewhere around 5-7 minutes. That won't be, your videos won't be obviously shared across to anyone because that strictly would remain with ourselves, not with anyone else, only with the Pune Center and with Kaushal sir because he's a soft skills trainer. तो वो evaluate करने के बाद हमें scores बताएंगे and उसके बाद फिर आप लोगों का जो scoring है वो LMS में update हो जाएगा. Apart from that, there will be elevator pitch जहाँ पे आप लोगों को again topic दिया जाएगा, उसके ऊपर बात करनी है, scoring accordingly. So everything would be there from the perspective of communication, how you have to deliver in front of the interviewer और जैसे आप लोगों को जब आप job करोगे, so how exactly you have to work using your domain as well as your communication knowledge. Okay, so all these things would be there. Then there'll be HR mocks also. So kind of questions, where do you see yourself after 5 years? Those kind of questions would be asked into the HR round. So that is also compulsion. So all these things needs to be completed. So your domain sessions would be comprising somewhere around 70% of your syllabus, 30% of your soft skill session. इसके बीच में आपके program interventions भी. So for us, the program manager is Nandita Nadik. So she'll be interacting with all of you guys twice in the entire course curriculum. She'll be checking your mock scores. कि आप लोगों के mock scores कितने आए हैं, क्या point पे she feels that this particular candidate does not has good domain knowledge in this particular topic, or where they can improvise or anything. Sort of those assistance would be provided by her. So she'll be checking out. Then she'll be letting you all know. She'll be helping you from the domain perspective. ठीक है, so वो online रहेगा आपके जो program intervention, because she is located in Bangalore, she cannot travel over here, so online interaction रहेगा, तो 2 बार ही रहेगा in the entire course curriculum. ठीक है, so now you understood what exactly your course would be running towards. Okay, any questions so far? No questions as of now. Okay, online students, any questions? No. No. Okay, great. So आपके जो communication sessions रहेंगे, as said over here, resume building and interview preparation sessions भी रहेंगे.
तो रेज्यूमे आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, we'll be giving you the format of Emartica जहाँ पे लोगो रहेगा Emarticas का, उसी में आप लोगों को सारी चीजें इनपुट करनी है, which will be uploading on the portal, और जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो it will when it will be completed after a year. I'll get back to you on that part. I'll tell you how exactly it will work. So this placement portal probably would be carrying all these other things as well, where we need to complete your interview preparation session from the domain perspective and from the soft skills perspective. So वो सारी चीजें complete होगी. So basic idea is we don't want the candidate only to be restricted towards the domain knowledge, because you have to crack the interviews. It's a placement guaranteed program. So we want you to crack the interviews into the first call itself. So we'll be preparing you accordingly. Now from the day one itself, what assistance we'll be requiring from your end is that हर एक चीजें जो भी टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, बी थरो विथ ईच एंड एवरीथिंग. प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कम ही पढ़ने वाला है टिल द एंड. तो आप लोग उतना प्रैक्टिस करते रहो, व्हाटएवर यू फील कि आपको स्टॉक्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, लाइव जो भी मार्केट में चल रहा है, be updated with the same. Download the applications, download the resources wherever you feel, because see, the trainer would be letting you all know each and everything, but you need to practice from yourself as well. ठीक है, तो जितना आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, I'll be expecting the entire batch to come under T1 और T2 criteria. तो वो आपका जो ग्रेडिंग है, तो जो ग्रेडिंग is divided into 4 parts: T1, T2, T3 and T4. So T4 is a rejected candidate, मतलब फीस भर दिया है, कुछ नहीं किया, तो we give the certificate of participation to the candidate. I'll just quickly open the. So this is there in your program schedule wala part. You can check from there also. Each and everything is written. So when you come over here at the last page, online students visible, right? Screen is visible, right? Yes, yes. Okay. So this is a tabular format where it is written ki what exactly the criteria you would be following if you score so and so marks. Okay. So जैसे you can see a certificate of participation is being given to the candidate who scores below 49. अब 49 क्या है कि एक असाइनमेंट हार्डली कंप्लीट किया होगा तो 49 स्कोर मिला है, तो उसके बिलो अगर कोई भी है, कुछ कंप्लीट नहीं किया, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट स्ट्रेट अवे आउट फ्रॉम द प्लेसमेंट पूल. वी विल नॉट बी गिविंग एनी काइंड ऑफ प्लेसमेंट टू दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट. The above tab mentions all the assignments. So assignment not visible to you all. Visible now? Yes, it's visible. Sorry, offline students were not able to view it. Okay. So these are the assignments which you need to complete. You already have this PDF with you. So you can just take a printout or you can keep it with yourself so that you can just check all these things out. So ये जो topics आप लोगों को दिख रहे हैं derivatives सब purely level 1 के ऊपर है. Level 2 के आपको यहाँ पे TLC, KYC वगैरह कोई topic नहीं दिखेगा because your midterm exam comes over there. So midterm is your level 1 and level 2 का syllabus and final exam is the overall concept. Similar to that, level 1 का mocks आपका purely level 1 के टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, लेवल 2 का लेवल 2 के टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, AML, KYC, reconciliation, all those topics would be there. And your level 3 that is your final. Level 3 and final is one and the same thing. Okay, so final mock would be there on the entire curriculum. तो तब आप लोगों को पूरा पढ़ाई करना है. ठीक है, फाइनल एग्जाम ऑल्सो सेम, पूरा पढ़ाई करना है, लेवल ऑल द लेवल्स का एंड फाइनल एग्जाम देना. Understood this? Product presentation is your domain presentation. एक टॉपिक दिया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, you have to present the topic with the help of the other members. उसके ऊपर बात करनी है आपको 5-7 minutes के लिए, and then the grading would be given. So apart from that, HR notes और आपके जो soft skills के मैंने YouTube submission elevator pitch भी बोला है, that also would be included over here. ठीक है, तो वो ये सारी चीजें आपकी ग्रेड बुक में दिखेंगी और सर्टिफिकेशन के लिए you'll be eligible if you complete all these things. ठीक है, एंड जो भी आपका फाइनल परसेंटेज रहेगा, लाइक 100% में से जो आपका फाइनल परसेंटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो नीचे टैबुलर फॉर्मेट में दिखा है वैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी आपका स्कोरिंग रहेगा. ओके, सो कमिंग टू दैट पार्ट इज दैट दीज आर योर 4 टियरिंग्स. T3 would be 50 to 69%. तो आप लोग अगर 50 to 69% में फॉल कर रहे हो तो यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम आवर एंड. ओके, सो दैट्स योर T3 क्राइटेरिया. Then 70 to 89 and above that T1 and T2. तो ये आप एक बार देख लेना, सर्टिफिकेट ऐसे मिलेगा ना. Yes, I'll tell you. I'll come to that part also. Now, why we have given the criteria of certificate
Over here, see, ये जो tiering या percentage है, that won't be reflected on your certificate. Certificate will be would have the logo of LSE. Then you'll be having the logo of Ematicas as well. Okay, London Stock Exchange का logo रहेगा, आपको brochure में बताया होगा, and Ematicas का logo रहेगा, NSDC का भी logo रहेगा. So everything will be affiliated because we are affiliated with them. So all these would be approved, and you'll be getting the certificate accordingly. इस पे कुछ tiering percentage mention नहीं रहेगा, but certificate का criteria रहेगा. अब you will be having a question, then we can go and tell the interviewer कि हम लोगों के each and every client knows ki what process we are following, because we have been into the industry for more than 8 to 9 years. They know this is certificate of excellence means you are under T1 criteria. So they know it immediately. They can understand and they can recognize this particular candidate. They fall under which particular percentage. Okay. So ये सारी चीजें उन लोगों को already पता है. Hence, just to not bifurcate कि आप लोगों को इतना percentage मिला, इतना percentage मिला, showcase करने के लिए we have created this particular criteria or the category of the certifications. Okay. अब इसका placement पे कैसे impact होगा? As I said, T4 will be a rejected candidate. T3 would not be getting multiple kind of opportunities. जैसे Big Four से वगैरह opportunities नहीं आएंगी या Goldman type की opportunities नहीं मिलेंगी. You will get the opportunities from financial institution. Maybe XR से मिलेगा या फिर आपको Citco से मिलेगा. So वहाँ ये सारे organizations की opportunities आप लोगों को मिलेगी. Is under the T3 criteria. Okay. Now, if in case you fall under T3 and you have interviewed for a company called Hexaware, उसके लिए आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है, आप लोगों ने इंटरव्यू क्रैक किया, आप लोगों को ऑफर लेटर मिला. उस ड्यूरेशन में अगर आपको दूसरी कंपनी भी आई है, उसके लिए भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, बट आप लोगों को पहला ऑफर लेटर आया Hexaware से, you have no choice, you have to accept that offer letter. कंसिडरिंग जो भी आप लोग, बिकॉज पहले जेडी पढ़ा, आप लोगों ने लोकेशन देखा, क्या क्राइटेरिया होगा, मतलब वर्किंग स्ट्रक्चर रहेगा, क्या डेजिग्नेशन आप लोगों को मिलने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग इज already explained to you in the JD itself. After that only you are applying. Considering that you are a T3 candidate, you do not have an option to opt for another opportunity. Whatever is being served in T3, you have to eat that. So we hope कि आप T3 में ना हो, T1 या T2 में आओ. Now what is the benefit of T1 and T2? If you fall under T1 or T2 criteria, you will be getting multiple opportunities at the same moment. And you will be getting the opportunity from GS, Barclays. At the moment, Barclays is not active, but Barclays would be active. So Barclays से मिलेगा आपको opportunities, आपको DB से मिलेगा, Deutsche Bank. So all these kind of investment banks purely, वहाँ से आप लोगों को opportunities मिलेगा. Then can you hear me? Yes. Okay, so I was talking about the T1 and T2 criteria benefits. So you'll be getting the multiple opportunities from these kind of investment banks. Okay, और भी आप लोगों को financial institutions जो higher package pay करते हैं, somewhere around like 4 lakh per annum, or because minimum जो हम लोग का start होगा for a fresher also the package would be 3.5. So 3.5 से नीचे तो नहीं आएगा, but 3.5 and above. Now that again depends on the particular candidate, how well versed he or she is into the domain knowledge and how well they can crack the interview. So accordingly वो package differ करेगा. But each and everything at the start itself, जब आप apply करना start करोगे, वो JD में mention रहेगा. तो पहले JD अच्छे से पढ़ लेना. If you have doubts before applying or before your CV is sent to the particular HR of the company, उससे पहले आप ये doubts clear कर लेना, उसके बाद ही. Now इसमें क्या होगा कि जब आप calls आपको मिल रहे हैं, in case if you reject any offer after getting the offer letter, you will be straight away out from the placement pool. Either considering कि आप T1 criteria हो, T2 हो, T3 हो. So I'll bifurcate exactly how it will be working. So अगर आप लोगों को T1 and T2 criteria है, this you understood कि आप लोगों को कितने कैसे opportunities मिलने वाली है according to the criteria. Online students, are you clear about this till now?
before I move Yes. ahead? Okay. Yes. Okay, great. So you'll be getting like all the 3 criteria students will be getting 5 interview calls. मतलब opportunities तो multiple मिलेंगी, but जो calls रहेंगे वो 5 रहेंगी. Now why we have restricted to 5? Because till now we have not got any candidate from the investment banking course itself जो 5 calls में भी interview crack नहीं कर पाए. तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है. इधर 3 मैक्सिमम है, 3 में क्रैक ही कर लेते हैं इंटरव्यू. अगर ऐसे कभी हुआ कि 5 इंटरव्यू कॉल्स देने के बाद भी a candidate is not able to clear the interview round, then probably we could recognize कि this particular candidate is not good with the domain knowledge and needs extra assistance. At that duration, we'll be asking you to re-attend the entire batch, give the remocks and re-examination, and then appear again. Okay, so this will be the process. Further, when you get rejected into all the 5 interview calls, opportunities multiple मिलेंगी. बहुत सारी opportunities आप लोगों को मिलेंगी, which will be either on the email or either on the Superset Access, जो placement portal है आपका. ठीक है? Clear till here? Any questions or doubts so far? Online students, any questions or doubts so far? Clear. Clear? Okay. So as I was saying that you will be out from the placement pool if so and so things would be happening. For example, if you get an offer from, for example, DB, and you have applied for the same, you have cracked the interview and you got the opportunity from DB. तो DB के अलावा उस टाइम पे अगर आपने किसी और कंपनी में भी अप्लाई किया है, यू आर वेटिंग फॉर दैट ऑफर लेटर. ठीक है, जब आप लोगों को ऑफर लेटर मिलेगा वहां का, अगर आप लोग T1 एंड T2 में हो तो मल्टीपल बहुत इंस्टेंसेस आते हैं कि एक ही टाइम पे 2 ऑफर लेटर भी मिले. दैट टाइम यू कैन, बिकॉज जब आप T1 एंड T2 में हो, दैट टाइम यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम A कंपनी और B कंपनी, डिपेंडिंग लोकेशन क्या है या कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, उस अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो. बट अगर आपको आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, उसके बाद इफ यू कम अप टू अस एंड टेल कि नहीं, लोकेशन इज नॉट गुड फॉर मी और सैलरी कम मिल रही है, अभी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो आई विल अप्लाई फॉर दैट, नॉट अलाउड. यू विल बी आउट फ्रॉम द प्लेसमेंट पूल. अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर लेटर, जब भी आपने, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू पर्टिकुलर कंपनी, अगर एक्सेप्ट करने के बाद दे विल क्लोज योर कैंडिडेटशिप, राइट. वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज गोइंग टू जॉइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट. इफ अगेन वी go back to them and tell this particular candidate is not joining from for this particular company, we have to give them a reason. If the reason is vague, they'll not accept. They'll straight away break the relationship with us. They'll not give any of their further opportunities. So we don't want to do that because we have been dealing with these clients for more than 7-8 years. तो हम लोगों को वो सारी चीजें नहीं करनी है. Hence again I'm saying that जब भी आप अप्लाई करते हो पूरा JD एक बार भर लेना. उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है, placement team is there, a dedicated placement team is there. Okay, so they will also be interacting with all of you guys. There will be 5 sessions on the placement interventions as well. जिसमें first session रहेगा signing of your ICR agreement. So your counselor must have told you that there will be a bond between Pneumaticas and the candidate. तो उसमें ये सारे जो clauses मैंने बताया वही सारी चीजें लिखी हुई है. You just have to accept it, sign it, send the soft copy on the email back to them. This will be your very first session with the placement team. Second, third, fourth session would be what kind of companies are right now hiring. What exactly you need to, what skills you need to develop, what extra you need to do, or what background you are from right at the moment, and whom they are hiring. So all these things will be transparent. Each and everything would be told to you, conveyed to you accordingly. Okay, and the 5th session probably would be after your Superset Access is being activated. तो वो कैसे यूज करना है, क्या-क्या opportunities उसमें आने वाली है, या resume कहाँ पे upload करना है, that will be your 5th session. Clear till here? Clear about the placement process? In depth सारी चीजें आप लोगों को ये interventions में बताया जाएगा. I'm just giving you an overview कि ये सारी चीजें होंगी. ठीक है? Any questions, online students? Online students, any questions? Yes, no question. None. No questions. All clear, right? I can hear only 2 voices. I'm not sure who are speaking. Others are sleeping, I guess. Guys, please be active. If you do not ask the questions, it will be very difficult for all of you guys to understand. You have to be interactive, and offline जितने students हैं, online जितने students हैं, एक दूसरे से बात करनी है आप लोगों को, because that group activities will also be there. So you need to know who are the other classmates, what exactly they have studied, or are you all on the same page? If you have any doubts, get it cleared from the trainer or with me or whatsoever it is. So be interactive, keep on asking the questions from day one itself to the trainer.
Okay, don't hesitate, don't think कि ये बाजू वाला मेरे क्या सोचेगा, मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया. No one is going to care. You all, after you all are leaving from here, maybe you'll not be having the contact with them. You would get the better opportunities if you study. So focus on that. You're here for yourself, right? Okay. So online students, please be active. I don't want to face a challenge with all of you guys that you're not responding. Also, attendance is one of the major parameter in your course. 80% attendance से नीचे अगर मुझे किसी का attendance दिखा, I'll straight away remove that candidate from the batch. Without informing, if you're not attending the sessions, it won't be accepted. अगर आप लोगों का कुछ भी urgency है, emergency है, you cannot attend the sessions, let me know. Keep me highlighted on the same so that I can tell you the alternative. बाद में अगर आपने एक महीना class attend नहीं किया, उसके बाद अगर बोला मुझे batch transfer चाहिए, not allowed because batch transfer charges are there. So we won't be able to add you to the next batch or ongoing batch, any of the batch. You have to attend the sessions in the same particular batch itself. Okay, clear till here, online students? Yes. Great. So how many from online are going to come offline? Because I had data. Yeah, Chetan. Yes, sir. Yes, ma'am. I'm coming from next month. Next week you're coming. Okay. At the time of level 2. Level 2. Yes. Baba, level 2 will start in after a month. After more than that. तो पूरा महीना आप ऑनलाइन करने वाले हो? हाँ, यस मैम, मैं लेवल 2 से ऑफलाइन आया हूँ. मैं इधर सोलापुर में हूँ, मैं पुणे में नहीं हूँ इस वक्त. सो मैं लेवल 2 से आया हूँ. देखते हैं मैम, मैं अभी मेरे एग्जाम चालू है, फिर मैं होने के बाद मैं सौरभ सर कांटेक्ट कर लूंगा. Who is your counselor? हेलो. Who is your counselor, Chetan? सौरभ कुमार सर. अच्छा, ओके, ठीक है. I'll get back to you by evening on the same. Okay. Others? Shivanjali, what about you? Yes, ma'am. I'm joining, but my exams in June, CS. So I will join this after June or June. जून तक तो आपका ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म हो जाएगा शिवांजलि. नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रही हूँ, तो मेरे एग्जाम चलते हैं, वो लेक्चर्स चलते हैं. तो जब इंटरव्यू हुआ था कौशल सिंह सर, उन्होंने बोला था कि लास्ट 2 months या फिर 3 months आप ज्वाइन करना पुणे में, क्योंकि वहां आना फेस टू फेस भी जरूरी है. So I will join. Who's your counselor, Shivanjali? Till now I'm talking to Anand Solanki sir. ठीक है. I'll get back to you also on this. Can I ask you one question? Yes, sure. Go ahead. Can you please explain assignment, which type of assignment will be given, or what exactly we have to do in that? Assignments will be MCQ based. तो आप लोगों को कुछ उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है. हाँ, सिर्फ 2 टॉपिक्स के ऊपर सॉल्व करना होगा. दैट विल बी योर TLC एंड फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज उसमें काफी सारा पोर्शन आपके सॉल्विंग के ऊपर रहेगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट इनटू द क्लास. आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है या एक्सेल कैसे यूज करना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा. सो ऑलमोस्ट लेवल 1 CA पे लेवल 1 तक का प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा. Only a couple of things would not be included, but almost each and everything would be completed from that perspective. तो आप लोगों का जो assignments रहेगा वो purely MCQ based रहेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना है particular जो right answer रहेगा. सबमिट करने के बाद आपको scores वहाँ पे आ जाएंगे. नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा कोई भी असाइनमेंट पे. ओके. और मॉक चलेगा वो भी ऐसे? मॉक्स आपका ओरल रहेगा 1 to 1. तो आप लोगों को स्लॉट दिया जाएगा, हर एक स्टूडेंट को हाफ एन आवर का स्लॉट दिया जाएगा. Level 1, Level 2 and final mocks रहेंगे. पूरे final mocks will be on the entire curriculum. Level 1 is restricted to the Level 1 syllabus. Level 2 is restricted to the Level 2 syllabus. ठीक है. तो आप लोगों को हाफ एन आवर का स्लॉट दिया जाएगा. उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे. रियल इंटरव्यू कैसे होता है HR के सामने या फिर जो पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन है उसके सामने, इंटरव्यूअर के सामने, वैसे ही आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा. उस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे. यू हैव टू बी ड्रेस्ड अप इनटू फॉर्मल्स. वीडियो ऑन करके रखना है. ऑनलाइन रहेगा, मॉनिटर्ड रहेगा, रिकॉर्ड करेंगे वो पर्टिकुलर मॉक को. ठीक है. और उसकी स्कोरिंग्स रहेंगी. हाँ, उसका पैटर्न रहेगा 50% सॉफ्ट स्किल्स, हाउ यू डिलीवर, हाउ यू आर्टिकुलेट द पर्टिकुलर सेंटेंस और हाउ यू फ्रेम द सेंटेंसेस, एंड 50% योर डोमेन नॉलेज. तो वो दोनों मिला के आपका स्कोरिंग रहेगा मॉक में. ओके, थैंक यू. हाँ.
आपको प्रिपेयर किया जाएगा. मतलब मॉक एक कोई ऐसे काइंड ऑफ नहीं रहेगा वैसे, बट आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे. So we don't have a particular question bank or anything, but I think you are asking about a demo kind of session ना, कि कैसे होने वाला है. और orally बताया जाएगा, verbally बताया जाएगा. कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है उसका. हाँ, in case candidate is not able to clear that particular mock, one more chance will be given accordingly. बट आप लोग स्किप नहीं कर सकते कोई भी एग्जाम मॉक को या फिर कोई असाइनमेंट को स्किप नहीं कर सकते. व्हाट डेट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, यू हैव टू अपीयर ऑन द सेम. ठीक है. Until unless if there is any emergency, keep me posted on that. Okay, because we are going to book each and every slot with the particular trainer. So when he or she is dedicating their time duration, we also need to be that particular and professional with them. Okay. Shivanjali, was I able to clear your doubt? Yes, ma'am. Okay, great. Next, others? Anita here. Yeah, Anita. Actually, ma'am, I'll be attending both online and offline. On Sundays, I'll be attending offline, but on Saturdays, I'll be attending online because of. Are you working? Yes. Okay. No problem. Next, who is next? Yes, Aditya. Yes, online Aditya. also. This is online also because I'm working. Yeah, so I will join the last month because this is the important. Achha. But you will be coming offline, that is what you're saying? No, online also. Online. You're not from Pune? Yeah, I'm in Pune, but currently I'm in hometown. So okay. That's why, yeah. Okay, okay, no problem. Next. Okay, thanks. Can I talk? Yeah. I will be attending offline lectures after 8th of April. And I will be shifting to a weekly batch. Weekday, okay. Who's your counselor, Archana? Prerna Jain. And one more thing is that. Yes, tell me. You are on mute, Archana. Guys, am I audible? Yes. Yes, you are, but she got disconnected, I guess. Okay, no problem. Sneha, what about you? I'll be attending online classes because I have to work and my shift is night shift, so it won't be possible for me to join offline. But you will be attending all the sessions, right? Yes, all the session I'll be attending. Okay. Again, like confirming the same, attendance is mandatory. 80% attendance needs to be there for each and every candidate. I'll be tracking the attendance for online and offline, both the students. Okay. So please make sure that whatever sessions you're attending needs to be attended full-fledged. Online maybe log in karke bhag mat jana, please, because I'll be checking the start time and end time also. Log in kiya, if you're interactive. Progression report also would be shared across with all of you. So वो discussion भी होगा. So each and everyone needs to be interactive in the class. Okay, clear, guys? Archana? Yeah. Sorry about that. I also reside in Mumbai, so. Okay. Will be if possible. You want to shift to Mumbai? Yes. Mumbai, where? Are you nearby Thane or are you nearby Andheri? Andheri. Okay, I'll get back to you by evening. I have to first speak to Prerna and then I'll confirm with you. Okay, sure. Thank you. Okay. So, all right, guys, I think that was all for today. This is what I did to explain to all of you, all these things. My screen. Online student screen is visible, right? No, it's not. Sorry. Okay. Visible now? Yes, ma'am. Yes. So these were all the things which I needed to explain all of you guys. What exactly our course would be there on the same. Your sessions would be starting from next week, upcoming week. Tomorrow there is no class, okay? Because I need to get all your details in place first, and then only we'll be starting off with your session. So immediately after the batch launch, we never have a session.
We will be having the session on coming Saturday. You will receive the weekly schedule on every Wednesday. तो नेक्स्ट वीक आपका सेशन क्या होगा वो वेडनेसडे तक आप लोगों को पता चलेगा ऑन द ईमेल. सो बी एक्टिव ऑन द ईमेल. इन केस इफ एनीवन वांट्स टू चेंज देयर ईमेल आईडी, चेंज इट टुडे और बाय टुमारो इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ आरती. तो आरती को कनेक्ट करना. शी इज फ्रॉम द फाइनेंस. शी हैज अ वीक ऑफ ऑन ट्यूसडे. तो अपार्ट फ्रॉम दैट डे एवरी डे शी इज अवेलेबल सेम टाइम 10 to 7. आप लोगों का कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड, रिसीप्ट से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न है, रीच आउट टू हर. तो अभी भी अगर किसी का कुछ लोन प्रोसेस बाकी है, फाइनेंस का है, इंस्टॉलमेंट है, speak to her on the same. Online students, you can call her and speak to her on the same. You'll also meet her after the session has been done so that you get all the things sorted out. Okay? तो ये सारी चीजें आप लोगों को स्केड्यूल जो है वेडनेसडे तक आएगा. इन केस अगर किसी को स्केड्यूल नहीं आता है वेडनेसडे एंड ऑफ द डे तक, जस्ट पिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप कि नहीं मिला है अभी तक, so that I can reshare with all of you guys. Okay? Timing for the session probably would be evening. Anyone has any concerns attending the sessions? कब attend करना है and all that? Evening or morning, because one of the sir, like during the introduction part, he told that the classes will be conducted in morning. Today is it? Yeah, Siddharth, today. Siddharth. Not Siddharth, sir. Another soft skills sir, something. Kaushik sir. Yeah. Okay, morning. So you all are okay with morning? Everyone is okay? Yes. Yes. Okay, so from 10 o'clock you can attend. You can come, right? Acha, okay. You are okay with it? With morning time? No, don't go with the crowd. Are you okay with it? And do you have any constraint? Working हो या पढ़ाई कर anything like that? घर पे ही हो ना, तो आ सकते हो, कोई problem नहीं. अच्छा, you can manage. What about you? You can manage. You will manage. Okay. Online students, everyone can manage in the morning. Yes. Okay. Yes. Anyone who cannot manage in the morning? 10 to 2 या 10 to 2. 4 hours. Okay. Every weekend day 4 मतलब कितना ही होगा 4 hours का? 4 hours का ही होगा. 10 से 2, सैटरडे संडे दोनों दिन. ओके. अगर ऑफलाइन ज्वाइन किया तो भी यही टाइम रहेगा? हाँ. जो बैच आपकी ऑफलाइन है वही ऑनलाइन भी चलने वाली है साइमल्टेनियसली. ओके. हाइब्रिड बैच ना. Everyone is okay, right? I'm considering everyone is okay. बाद में आके मुझे इवनिंग के बैच का टाइमिंग क्या होगा अगर हम लेते हैं तो? अगर इवनिंग है तो मैक्सिमम हम लोग 2 o'clock या 2:30 से स्टार्ट कर सकते हैं उसको. हाँ, सॉरी, मॉर्निंग ही ठीक है. अच्छा, ओके. अगर मुंबई में हुआ तो ऑफलाइन बैच? हाँ, हेलो, बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अगर मुंबई में ऑफलाइन बैच अटेंड करनी होगी तो फिर वो इवनिंग रहेगा या मॉर्निंग? वो मुझे चेक करना पड़ेगा जो मुंबई के लोकल गवर्नेंस है उनके साथ. तो आई विल चेक एंड आई विल गिव ऑल द डिटेल्स टू यू बाय इवनिंग मैक्सिमम. ओके, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है. बाकी सारे लोग कंफर्टेबल है? वापस पूछ रही हूँ एक बार. Yes, comfortable. ग्रेट, ठीक है. सो टाइमिंग्स ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी कन्वेड. आप लोगों को एलएमएस एक्सेस मैक्सिमम ट्यूसडे तक आ जाएगा. वीकली शेड्यूल जो है आपको वेडनेसडे तक आ जाएगा नेक्स्ट वीक का. कल लेक्चर नहीं है, वापस एक बार बोल रही हूँ. तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज मत डालना कि कल लेक्चर है कि नहीं. कल लेक्चर नहीं है. नेक्स्ट वीक सैटरडे को सेशन रहेगा. टाइमिंग विल बी 10 to 2. ओके, फिक्स्ड. Any doubts so far before we wind up the session? Online students, any doubts so far? No, any doubts. Clear. No. Great. So I'll meet you all on upcoming Saturday. अगर कुछ details provide करनी होगी मुझे तो I'll provide on the same. ठीक है, आप लोगों को कुछ भी doubts रहेंगे during the week, reach out to me on the WhatsApp group or call or message. Anyway, अभी नहीं करो. जब भी आप लोगों को मेल आएगा ना LMS का login credentials, उसके बाद डाउनलोड करना. Thank you so much. Okay, thanks, Harsha. Thanks. Bye. Can we wind up? Yeah, you can. Okay, thanks. Thanks.